So the cop and the anthem. This is a very interesting chapter which is written by O. Henry. The tales of O. Henry are very interesting. Okay, so the cop and the anthem. Okay, before getting into this chapter, we are going to discuss something. Is that something like ever happened with you that you are thinking something जैसे आप कुछ सोच रहे हो और हमेशा आपके साथ उसका opposite हो जाता है? So this whole chapter is full of such situations that whatever you want to happen is not happening with that man. So the story is basically about a man named Soapy. This is a man who is jobless, okay? We are going to talk about this man in the whole chapter and his attempts in order to get into prison. Yes, he is making attempts to get into prison. We'll be discussing why he wants to get into the prison, okay? So basically, Soapy is a homeless man, homeless man as well as a jobless man. He doesn't even have a home, neither a job. Okay, he used to live in a park in Madison Square. वो एक park के bench पर सोता था, उठता था, Madison Square में था वो park. Okay, he could see signs such as ये सब वो signs देखता है. Birds began to fly to south. Birds were flying to the south, and people wanted new warm clothes and clothes as well as coats. They basically wanted coats. So a dead leaf fell at his feet. This happened one day. So अब ये किस चीज़ के signs थे? ये उस चीज़ के signs थे that winter was approaching. Now when winter was approaching, just imagine कि एक बंदा जो कि सिर्फ पार्क के बेंच पे रहता है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा विंटर के वो टाइम निकालना. So it was very difficult for Soapy to spend those 3 months of winter without food and everything. So he wanted to go into a prison. Okay, and now he makes many attempts to get into that prison. Okay, he decides that he needs to get into a prison for 3 months on Blackwell's Island. That was the place for his winter home. It was just like his winter home from many years. Okay, then he could get a bed every night and food for 3 months and also be safe from cops. He was thinking कि अगर मैं जेल में चला जाता हूँ, prison में चला जाता हूँ, वहाँ पे मुझे food भी मिल जाएगा, bed भी मिल जाएगा सोने के लिए. So it's a good idea to escape the cold in the winter. Okay, so for years Blackwell's Island was his home, had been his home for years. So that's how he used to do कि जब भी winters आती थी वो ऐसा कुछ करता था कि cops उसको prison में डाल दे and वो उसको island में send कर देते थे. So his winters went well there. Okay, so now he makes attempts he made to go into the jail. अब वो start होता है वो कहते हैं कि अब ना मैं अटेम्प्ट्स करूंगा सो दैट मैं जेल में चला जाऊं. सो हिज फर्स्ट अटेम्प्ट वाज टू डाइन इन एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. सो हिज प्लान वाज लाइक कि मैं एक बहुत एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में जाता हूं, आई विल सिट देयर, आई विल ईट देयर एंड व्हेन दे आस्क मी टू पे द बिल आई विल से कि मेरे पास पैसे नहीं और वो मुझे पकड़ के क्या करेंगे, कॉप्स को पकड़ा देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे एंड माई प्लान इज सॉर्टेड. उसको लगा कि ये तो बहुत ईजिली हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो सोपी बेसिकली वॉक्स फ्रॉम मेडिसिन स्क्वायर टू द place where the great street called Broadway and Fifth Avenue met. वहाँ पे एक restaurant था, बहुत lit था. That was a very nice restaurant, you can see. So there he stopped at a brightly lighted restaurant. This was where the best food, the best people in their best clothes appeared every evening. That was a very famous restaurant and it was known for the best food it had and the people of that place. Right? So this was the restaurant. What happened? उसने सोपी ने अपने आप को देखा, उसने कहा यहाँ तक ऊपर तक तो मैं ठीक लग रहा हूँ. Although his shoes were torn, उसको लगा कि मुझे एंट्री तो अंदर मिल ही जाएगी. So when he tried to get into the restaurant, क्या हुआ, जो हेड वेटर था उसने उसके torn shoes देख लिए and उसने उसको रेस्टोरेंट के अंदर आने ही नहीं दिया. That's how his first plan got flopped. उसको एंटर ही नहीं होने दिया. So कॉप्स के पास तो लेके जाना वो दूर की बात थी. ठीक है, so that was his first plan कि first of all उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं एंटर होने दिया. नेक्स्ट प्लान, उसने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज पासिंग बाय 6th एवेन्यू, वहाँ पे एक शॉप थी जो कि बहुत अच्छी थी. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप एंड इट वाज जस्ट कवर्ड विद ग्लास, ऑल ओवर ग्लास विंडो थी उसकी. व्हाट ही डिड, ही पिक्ड अप अ स्टोन. It was very bright actually with the glass window. So what he did, he picked up a big stone, Soapy, and he threw it on the window and the people just rushed. Just imagine you're sitting in a shop, वो पूरी glass window पे उसने मार दिया वो बड़ा सा stone. What he did,
जनरली अगर कोई भी ऐसे करता, वो क्या करता है, ऐसे भाग जाता। सोपी चाहता था कि उसको पुलिस पकड़ ले। सो दिस कॉप वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम आउट ऑफ दैट रेस्टोरेंट। तो सोपी क्या कहता है, मैं ही हूँ वो, आई हैव डन दिस। सो सोपी सेड दैट आई हैव डन दिस एंड द कॉप सेड नो, अगर तुमने किया होता कोई ऐसे रुकता थोड़ा है, कोई एक अगर चोर भी हो जाए या कोई ऐसे नोटोरियस मैन होता है, वो कभी भी ऐसा करके रुक के ये थोड़ा कहेगा कि मैंने किया है। सो व्हाट हैपेंस इज उसका सेकंड प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और उसको कॉप्स फिर से अरेस्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, दैट्स हाउ हिज प्लान गॉट फ्लॉप्ड। नाउ मूविंग ऑन, सोपी फाइनली फाइंड्स अ रेस्टोरेंट वेयर नो वन स्टॉप्ड हिम, ही सैट एंड हैड डिनर। What happened? Next he finds a restaurant जहाँ पे उसको मतलब नॉर्मल लोग आते थे और वहाँ पे इतना हाई रेस्टोरेंट नहीं था, बट उसको लोगों ने I mean जो वेटर्स वगैरह थे, किसी ने उसको स्टॉप नहीं किया। He had dinner there. So he thought that after having dinner he'll say मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे कॉप्स के पास पकड़ा देंगे। This was his plan. But what happened? जैसे उसने डिनर कर लिया एंड उसके पास बिल लेने के लिए वेटर आया, तो उसने वेटर को कहा that I don't have money. So he said that I don't have money, you can call the police. So he wanted basically to get arrested ना, तो उसने कहा you can call the police, I don't have money. But then उसको जो waiters थे उन्होंने पकड़ा और बाहर फेंक दिया, उन्होंने भी कॉप को बुलाया ही नहीं। They said that we don't have so much of time to waste on you. So उन्होंने कॉप को बुलाया ही नहीं और उसका नेक्स्ट प्लान भी फ्लॉप हो गया। Now moving on, now a sudden fear caught him. No cop was going to arrest him. अब उसको डर लगने लग गया था सोपी को कि अब मुझे कोई कॉप अगर अरेस्ट ही नहीं करेगा तो मैं अपनी विंटर्स कैसे निकालूंगा। That was, that's why he was frightened. उसे डर लग रहा था सोपी को। So what happened? He passes through a cinema hall, right? Next he behaves as if he was drunk in the proximity of a policeman. What happens is he's passing through a cinema hall and there वहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा होता है। There in the proximity of a policeman means nearness of a policeman. What he does is he behaves drunk and he does like weird things, and starts shouting. उसको लगता है कि मैं अगर shout करूँगा पुलिसमैन तो मेरे साथ में ही खड़ा है और वो मुझे जल्दी से arrest कर लेंगे, right? That was his plan over there. But what happened? The policeman did not arrest him. Instead he was shouting and behaving that he was drunk. पुलिसमैन ने उसको arrest किया ही नहीं. So what happened? पुलिसमैन ने अपने साथ खड़े हुए मैन को बोला that we have orders not to say anything to the college boys. उसको लगा कि वहाँ पे वो एक college boy है और उनका कोई party night चल रही थी, तो पुलिसमैन ने बोला we have orders that we are not going to say anything to them. So that's how again his plan failed. अब वो बार बार ये सोच रहा था कि मुझे पुलिसमैन अरेस्ट कर ले, बट पुलिसमैन ने अरेस्ट नहीं किया. That's the situation that is going on in the whole chapter. Okay. Now what happens next is, again he doesn't lose hope and he keeps on trying Soapy because he wanted a home for winter. So Soapy ने क्या किया, उसने एक man को देखा with an umbrella in a shop. So it was raining. So उस man ने क्या किया, अपनी umbrella shop के बाहर रख दी. Soapy went silently. The man's umbrella stood beside the door. Door के साथ खड़ी थी. The Soapy took his umbrella and walked slowly. The man followed him. अब जिसकी umbrella थी ना, वो man ने Soapy को follow किया and he said my umbrella. उस man ने ऐसा बोला. तो then Soapy said, अच्छा तुम्हारी umbrella है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि cops को बुला लो? But that man got scared and he said तुम्हारी umbrella है. सोपी ने कहा तुम्हारी umbrella है तो बुला लो ना cops को. But वो man cops को नहीं बुलाता है. What is the reason कि वो cops को नहीं बुलाता? Because वो man ने खुद steal की होती है umbrella, मतलब उसके पास खुद किसी और की umbrella होती है, तो वो man को लगता है कि Soapy is the actual owner of that umbrella. So वो man उसको कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चले जाता है. And Soapy gets that umbrella also, which was actually stolen by that person. Okay, that's what happens. Now Soapy was tired and all his hopes were dead. So what happened? After so many efforts, his hope went all down. He was thinking कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है. He began to move towards Madison Square. He was going home. Again, home here is again that bench in that park. उसका वही था. तो
अब क्या होता है, यहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है ना, वो आता है सोपी के लिए. सो व्हाट हैपेंस इज, जब वो स्ट्रीट के थ्रू जा रहा होता है, while walking through that street back to his place, he stopped at a quiet corner. वो रुक जाता है एक छोटी सी जगह पे. There was his childhood home. Why does he stop there? वो वहाँ पे क्यों रुक जाता है? Because वहाँ पे उसका childhood home होता है. Through one window, Soapy could see a soft light shining that had been his living room. वो वहाँ पे खड़ा होके वो एरिया को पूरा देख रहा होता है और वो सोचता है, yes, this was my living room. Then what happened next? Music that came from the room held Soapy there. There was a soft music and he was, like held by that music. जैसे बहुत मूव नहीं कर देते कोई म्यूजिक हमें जब हम सुनते हैं, तो ऐसे ही he was very much moved by that music. Soapy was moved. And what happened? He thought of his childhood days with his mother, friends and high hopes. उस म्यूज़िक ने उसको याद दिला दिए थे वो अच्छे दिन उसने अपने मम्मा के साथ स्पेंड किए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किए थे, और वो डेज जब हाई होप के दिन थे, मतलब व्हेन एवरीथिंग वाज गुड, ही वाज रिमेंबर्ड ऑफ ऑल दोज डेज. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ सडन चेंज इन सोपी. उसने सोचा आज के बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग विद माई लाइफ, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अ जॉब एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दोज डेज बैक. व्हाट एम आई डूइंग, उसको सब कुछ ऐसा लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इतने टाइम से. सो ही रियलाइज हाउ मच ही हैड फॉलन डाउन. ही सॉ द वेस्टेड टाइम. अब उसे अपना जितना टाइम खराब किया था उसे दिख रहा था. His wrong desires, his dead hope and lost power of mind. He could see everything clearly. That's when Soapy decided to fight and change his life. So he decided, I'm going to get a new job and I'm going to fight. He would again find purpose in life. He decided to find work next day. So what happens is वो decide कर लेता है अब मैं जाऊँगा और work ढूंढूंगा. There was a person who was calling him for a job but he didn't go. So he thought that next morning मैं उस बंदे को call करूँगा and I'm going to get a new job. So that was the change of his mind. अब now he did not want कि अब उसको पुलिस दोबारा पकड़े और वो winters के लिए वो prison में जाए. He wanted to find a job. अब वो ये करना चाहता था. Okay, but what happens is just then when he was standing there and looking at that place, his home, childhood home. So just then what happens is Soapy felt a hand on his arm. Right? It was a cop. He felt a hand on his arm and he saw that it was a cop. He turned behind and cop ने पूछा, what are you doing here? He was full of his new strength. अब cop ने उसको पकड़ लिया था. कॉप कुछ भी कर सकता था उसके साथ, बट क्या हुआ, सोपी वॉज फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ एंड ही वॉज मोटिवेटेड. तो उसने पहले इनिशियली उसको बोला दैट नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. देन कॉप डिड नॉट बिलीव हिम. सो व्हाट ही डिड, सोपी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द कॉप एंड इट्स वेरी बैड टू आर्ग्यू विद द कॉप लाइक इन न्यूयॉर्क, राइट? सो व्हाट हैपेंड, द कॉप अरेस्टेड हिम. नेक्स्ट मॉर्निंग द जज sentenced him to 3 months prison on Blackwell's Island. That's what happened with him. So this is just a story depicting that when Soapy wanted to get into the jail, he was not able to get into the jail. But when he decided that he will not go to the prison, he will find a new job, that's when he is caught by the cop and he is sentenced to 3 months prison. Like he is declared that he'll go to the prison for 3 months. So it's an interesting and humorous chapter which also helps us to learn a lot. Like we should keep our hopes high all the time, right? Like situations in life will come where we don't feel like keeping them high. Adverse situations can come, but still we should be working out on them instead of running from them. All right? Now we'll be moving on to the question answers of this chapter.